Good morning, students. Today we are going to discuss chemical kinetics, part 1, unit number 4. Means third unit is electrochemistry. That lesson was completed. Next we are going to start chemical kinetics. In this lesson, we will learn about a rate of reaction. A rate of reaction is very important. Here, every reaction consists of two parts. One is R, second one is T. R means here reactant, T means product. Means in this chemical reaction, substance having specific properties which is converted into product, that product having specific properties. Means here when the reaction will occur, the reactant will be converted into product. Means reactant having some specific properties, after reaction it will be converted into product, and product also having some specific properties. It means here reactant having individual properties and product also having individual properties. When reaction will occur, when reactant will be converted into product, then reaction is over. That's why reactant is converted into product. The properties of reactants will be changed at the place of product. Right here we know to find here we want to find some factors, that is one is feasibility of the reaction, and second one is extent of the reaction, and third one is speed of the reaction. First one, every chemist or you or myself also, every chemist try to find the three factors of the chemical reaction. That is first one, feasibility of a chemical reaction. Feasibility of a chemical reaction, and second one is extent of a reaction, extent, extent, and third one is speed of reaction, speed of reaction. These 3 points want to know every chemist. First one is feasibility of chemical reaction, second one is extent of reaction, and third one is speed of reaction. Here, feasibility of the reaction means what? Feasibility means actually when we add two reactants, this reaction will be occurred or not. The reaction होगा कि नहीं होगा? Two different type of reactions होने दो. तो reactant actually product में convert होता है कि नहीं होता है, उसको find out करने के लिए ये feasibility of the reaction. Actually reaction होने के लिए chances है कि नहीं है, तो two different reactants होने दो, only one reactant होने दो, no problem. But reaction होगा कि नहीं होगा, ये point explain. But how do we find this feasibility of the chemical reaction? We find this feasibility of the reaction from thermodynamics. Yes. Last year means 11. In 11th you already learned about thermodynamics. Thermodynamics, the word is delta G. Change in free Gibbs free energy. If the Gibbs free energy value is less than 0, that means delta G value is in negative sign, then the reaction will occur spontaneous reaction. Delta G is equals to negative होगा तो spontaneous reaction, positive होगा तो non-spontaneous reaction. In case delta G value is 0, then that reaction is equilibrium reaction. So by this we can find the feasibility of the reaction from thermodynamics. That means thermodynamics explains feasibility of a chemical reaction, first point. And the second one, extent of the reaction.
Extent means here extent to which reaction will proceed can be determined from chemical equilibrium. Extent means actually reaction product साइड हो रहा है क्या, रिएक्टेंट साइड हो रहा है क्या, तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है, ये एक्सटेंट एक्सप्लेन कर रहा है। मीन्स यहाँ पे प्रोडक्शन रिएक्टेंट का इंक्रीज हो रहा है क्या, प्रोडक्ट का इंक्रीज हो रहा है क्या, तो extent of the chemical reaction it is explained by equilibrium. Equilibrium से ये पता कर सकते। And next one is speed of the reaction. This speed of the reaction, time taken by a reaction to reach equilibrium. This is very important. This speed of the reaction will explained by chemical kinetics. Chemical kinetics में हम लोग ये लर्न कर रहे हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग इसे मेजरमेंट करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा, टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम से ही स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो हियर द टाइम टेकन बाय रिएक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए जो टाइम होता है वो स्पीड ऑफ रिएक्शन होता है। मीन्स every reaction having specific speed of the reaction, so all reactions are not same speed, तो different vehicle different speed से जाता है, same different reaction का different speed होता है। तो ये speed हम लोग कहाँ तक calculate करते हैं, equilibrium तक। in chemistry every reaction try to get equilibrium, तो equilibrium आने के लिए ट्राई करें, तो वहाँ पे equilibrium आने के लिए जो टाइम है वो टाइम स्पीड पे डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल फोर रिएक्शंस है, फोर डिफरेंट रिएक्शन में एक रिएक्शन 1 आवर में इक्विलिब्रियम अटेंड करेंगे, एक रिएक्शन हाफ एन आवर में इक्विलिब्रियम अटेंड करेंगे, एक रिएक्शन 15 मिनट्स में, एक रिएक्शन 5 मिनट्स में इक्विलिब्रियम को अटेंड करेंगे। मींस दिस टाइम विल बी explain the speed of the reaction, means the जो रिएक्शन 5 मिनट्स में इक्विलिब्रियम को अटेंड किया मतलब उसका स्पीड ज़्यादा है, जो रिएक्शन 1 आवर के बाद इक्विलिब्रियम को अटेंड किया उसका स्पीड बहुत कम है। मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन विल कैलकुलेटेड बाय द टाइम ओनली, टाइम से ही हम लोग स्पीड ऑफ द रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। So these three factors every chemist want to know. First one is feasibility of chemical reaction, extent, and second one is speed of the reaction. Extent means actually reaction forward direction पे हो रहा है, reverse direction पे हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट मैक्सिमम फॉर्म हो रहा है क्या, रिएक्टेंट मैक्सिमम फॉर्म हो रहा है, वो इक्विलिब्रियम से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम के इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन मेजर करेंगे तो वहाँ पे एक्सटेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। Right. Next one, feasibility of reaction is explained by the Gibbs free energy change and speed of reaction explains chemical kinetics. Actually, what is the difference between chemical kinetics and thermodynamics? That is important. Thermodynamics explains only these two things: feasibility and extent of the chemical reaction. But chemical kinetics explains completely speed of reaction. Speed of reaction means एक रिएक्शन कितना टाइम में कंप्लीट होगा, कितना टाइम में कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कितना टाइम में कितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा। तो टाइम मेजर करने के लिए तो कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, मीन्स कंजम्पशन मीन्स रिएक्टेंट डिक्रीज होगा तो इतना टाइम में रिएक्टेंट कितना डिक्रीज होगा, इतना टाइम में कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मीन्स यहाँ पे रिएक्टेंट कंजम्पशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन बेस किस पे होता है, डिपेंड ऑन द टाइम। तो दिस स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन विल बी एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ product and consumption of reagent. Next, here another one of the important topic, the rate and the factors controlling the effect of chemical reaction for its complete understanding. For example, so feasibility of reaction, extent of reaction, and speed of reaction, and another two factors are very important. One is a rate of reaction, a rate, and another one the factors affecting the rate. Factors
effect rate. Means here some factors are there. These factors will affect the rate. Means actually speed of reaction means rate of reaction. What is the rate of reaction and which are the factors affect the rate of reaction? First, we want to know about these three things and as well as these are also very important. Which factors are affect the speed of the reaction? Here, what is chemical kinetics? ये only general information. Actually, chemist ये जानना चाहते हैं feasibility, extent of the reaction, speed of the reaction. That means the rate as well as which factors will affect the rate of reaction. And here, chemical kinetics means which deals with the study of rate of reaction rate and their mechanisms. So, the study of rate of reaction and its mechanism is known as chemical kinetics. First one is rate of reaction and its mechanism. Rate of reaction and its mechanism study को chemical kinetics करते हैं. The study of rate of reaction and its mechanism is known as chemical kinetics. Means rate. इसलिए यहाँ पे last point को explain किया है. Speed of the reaction. This speed completely related with time. The rate of reaction and mechanism will be explained by chemical kinetics. Here, the word kinetics is derived from Greek word kinesis meaning movement. Kinetics, kinesis. Kinesis means movement. Kinetic word actually Greek word. This Greek word is kinesis. Kinesis. Kinesis means movement. Kinesis means movement. Chemical movement. The chemical movement कब होगा? When reaction will occur, then movement will be possible. Means when reactant will be converted into product, then the movement will be occurred in that reaction. Movement means reactant, conversion of reactant to product. So this word is a Greek word. Greek word means kinesis is equals to movement, and its thermodynamics tells only about the feasibility of a reaction, whereas chemical kinetics about tells about the rate of reaction. Already explained this one. Thermodynamics explains feasibility of the reaction, and chemical kinetics explains rate of reaction. This rate of reaction will explained by chemical kinetics. Feasibility of the reaction will be explained by thermodynamics. And next, here, chemical kinetics. Kinetic studies not only help us to determine the speed of rate of reaction, rate of chemical reaction, but also describing the conditions by which reactions rate can be altered. Here, so chemical kinetics explains the rate of reaction. So rate of chemical reaction को explain करेंगे as well as the factors affect the chemical rate of reaction. Chemical kinetics explains the rate of reaction as well as affecting the factors on rate of reaction. Factors affect the rate of reaction. This information also given by chemical kinetics. Rate को explain करेंगे and rate will be affected by some factors. The factors also explained by chemical kinetics. Here, which factors are affecting the rate of reaction? The first one is temperature. Temperature, one of the
factor affect the rate of reaction. First one is temperature, and second one is pressure, and third one is concentration. Temperature, pressure, and concentration, and fourth one is catalyst. Catalyst. These are the main factors which affect the rate of reaction. ये फोर फैक्टर्स से मिलेंगे, तो ये फोर फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। इसके बारे में भी केमिकल काइनेटिक्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट वन इज व्हाट इज rate of chemical reaction. Rate of chemical reaction. Now first topic in chemical kinetics, rate of chemical reaction. Rate of chemical reaction. RX means reaction. Correct. What is the rate of chemical reaction? Here, the rate of chemical reaction will be explained with time only. So, for example, एक व्हीकल ले लो, व्हीकल का स्पीड आप कैसे मेजर करते हो? ट्रैवलिंग डिस्टेंस विथ टाइम. ट्रैवलिंग डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर्स मूव होने के लिए कितना टाइम है? एक एक व्हीकल का एक एक स्पीड होता है, तो ये स्पीड किसके साथ कैलकुलेट करते हैं हम लोग? टाइम के साथ. कितना टाइम में ये व्हीकल 10 किलोमीटर्स ट्रैवल किया और ये व्हीकल कितना टाइम में 5 किलोमीटर्स ट्रैवल किया. तो ट्रैवलिंग डिस्टेंस वर्सेस टाइम, तो ये दोनों से इसका स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं. मतलब लेस टाइम मैक्सिमम डिस्टेंस मीन्स स्पीड मैक्सिमम टाइम less distance, so speed slower. Similarly, in chemistry, there are three types of reactions: speed reactions, slow reactions, and moderate reactions. तो ये speed, slow, moderate हम लोग कैसे कैलकुलेट किया? with the time only. तो lower time maximum speed, maximum time minimum speed. Here first one is fast reactions. In chemistry, there are three types of reactions based on time. First one is fast reaction. Second one is slow reactions. And third one is moderate reactions. Three types of reactions are present in chemistry. Which reactions are fast reactions, which reactions are slow reactions, and which reactions are moderate reactions? Now we are going to see some examples. Fast reactions. Fast reaction means all ionic reactions are fast reactions. All ionic reactions are fast reactions. Example. Here, the precipitation of silver chloride occurs instantaneously by mixing of aqueous solution of silver nitrate and sodium chloride. Silver nitrate AgNO plus sodium chloride. Here, the precipitate will occur between these two ionic substances. Sodium chloride also ionic substance and silver nitrate also ionic substance. Ionic substance होगा तो reaction और speed होगा, so that's why these reactions are known as very fast reactions are instantaneous reaction. Instantaneous reaction में time gap बहुत कम होता है, but that time gap will be calculated. तो जिसमें जो वेरी स्पीड रिएक्शंस होता है टाइम गैप को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, वो रिएक्शंस भी होता है, राइट. तो वो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन
तो टाइम जिसमें हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते उसको इंटीग्रेशन अप्लाई करके फाइंड आउट करना पड़ेगा. विल डिस्कस नेक्स्ट. फर्स्ट, fast reactions. All ionic reactions are fast reactions. Silver nitrate react with sodium chloride and forms silver chloride PPT precipitate. AgCl. This one is solid substance PPT. Precipitate form. ये जो precipitate है इमीडिएटली हम लोग टू डिफरेंट बिगर, फर्स्ट बिगर में सोडियम क्लोराइड है, सेकंड बिगर में सिल्वर नाइट्रेट है, दोनों को ऐड करो एक बिगर में, तुरंत AgCl सिल्वर क्लोराइड पीपीटी फॉर्म. तो यहाँ पे टाइम गैप बहुत कम होता है इन फास्ट रिएक्शन. एंड नेक्स्ट, सम रिएक्शंस आर स्लो रिएक्शंस, वेरी स्लो. उसका रिएक्शन कैपेसिटी 1 month, 2 month, 3 months, 6 months की टाइम लगेगा. Example, slow reaction example, that is rusting of iron. Iron rusting, last class में explain किया था. Iron rusting one of the best example for slow reaction. Iron rusting कब होगा? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मॉइस्चर अवेलेबल होगा तो आयरन अपने आप Fe2O3 आयरन ऑक्साइड लेयर को फॉर्मेशन करेगा. तो दैट इज वन ऑफ द स्लो रिएक्शन. तो रस्टिंग ऑफ आयरन, is slow reaction, and these reactions are moderate reaction. Between these two, very fast होगा, very slow नहीं होगा. That type of reactions are known as moderate reactions. Moderate reactions examples are here: conversion of cane sugar and hydrolysis of starch. Conversion of cane sugar and hydrolysis of starch, which proceeds with a moderate speed. तो मॉडरेट स्पीड पे हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर एंड हियर इन्वर्शन ऑफ केन शुगर एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च. हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च एंड इन्वर्शन ऑफ केन शुगर. These two reactions are moderate reactions, and rusting of iron is slow reaction, and very fast reactions are all ionic reactions are very fast reactions. Now here we want to know the rate of reaction. Rate, how we will calculate rate? Distance covered by the vehicle with time. Similarly, reactant R to P. Reactant will be converted into product with time, that is the rate of reaction. Here the rate of decrease in concentration of any one of the reactant is equals to rate of reaction, and another one, the rate of increase in concentration of any product, any one of the product is considered as rate of reaction. For example, these are the types of reactions. Rate, now we are going to discuss rate of the reaction. Here, for example, R means reactant, and P means product. When reaction will occur, this will convert into P, reactant to product. Here, rate of reaction is expressed like this. When the concentration, यहाँ पे क्या होता है, concentration decrease होगा तो ही product form. When the concentration of reactant, any one of the reactant, तो यहाँ पे reactant सिर्फ एक ही reactant होना जरूरी नहीं है, दो तीन reactant भी होना हो सकता है. तो the decrease in concentration of any one of the reactant is known as rate of reaction with respect to reactant. With respect to product, increase in concentration of product with respect to product, that is also rate of reaction. Means reaction होगा तो कभी भी concentration of reactant का decrease होगा, concentration reactant will be decreasing and concentration of product will be increasing with time. That is known as rate of reaction.
तो इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, फर्स्ट रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन एट T is equals to T1 is equals to R1 concentration, T2 is equals to R2 concentration. Before reaction, after reaction. Before reaction एक concentration होगा, after reaction एक concentration होगा. So at the time of T1, the reactant concentration is R1. At the time of T2, reactant concentration is R. And similarly, here at the time of T1 is equals to concentration of product is T1, means T1 nothing but 0 here, and after T2, T1 to T2, the concentration of product is T2. Means time change होगा तो concentration of product change हुआ, time change होगा तो concentration of reactant change. Here time change delta T is equals to T2 minus T1, time change. And here change in reactant concentration. Change in reactant concentration. Delta R is equals to R2 minus R1. Change in concentration of product. That here compulsory we will mention concentration with square bracket compulsory mention करना है. Here these are the square brackets are very important क्योंकि यहाँ पे P R concentration. Square bracket indicates to its concentration. Here delta R is equals to concentration of R2 minus concentration of R1. And here delta P means concentration of product. Change in concentration of reactant, change in concentration of product, that is equals to concentration of product P2 minus concentration of product P1. So P2 minus P1 is equals to change in product, R2 minus R1 change in reactant. किसमें changes है? Concentration. Square bracket indicates to its concentration. This word is important. Concentration को indicate करता है. Square bracket is equals to concentration. So delta reactant concentration change. Delta P product concentration change. So regarding times, so different times reactant product have a different concentration. Initial time reactant have R1 product P1. After some times means time will be consumed, the concentration of reactant will be decreased, product will be increased. Then the change in concentration of reactant after some time R2 and product is P2. And here the rate of reaction is expressed with letter R. Rate of reaction indicates with R. Rate of reaction. Rate of reaction is indicated with small r, that is equals to decrease in concentration of reactant R. Decrease in concentration of R. इसका concentration decrease होगा. Decrease in concentration of R upon with time taken. Time taken. तो इसको इक्वेशन फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो यहाँ पर डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर अपन टाइम टेकन. तो टाइम टेकन चेंज क्या होता है? टाइम डेल्टा टी एंड डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, तो इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल. यहाँ पे मैं सिंपल डिक्रीज हुआ ये बोला, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. डिक्रीज मतलब वहाँ पे माइनस सिंबल, माइनस मीन्स डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर अपॉन change with the time delta t.
यहाँ पे माइनस इंडिकेट्स टू decrease in concentration of reactant with respect to time change. So concentration always when the reaction will be occurred, then concentration of reactant will be decreasing. Reactant को concentration decrease होगा तो ही product को concentration increase होगा. तो यहाँ पे with respect reactant, the rate of reaction is minus concentration of R upon delta T. And next with respect to product भी लेना है. तो with respect to product, the rate of reaction is product को लिखना है तो concentration of P upon delta T. यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज जरूरत नहीं क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा. तो इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन में सब नहीं लिखा इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन. तो यहाँ पे टाइम टेकन मींस चेंज इन टाइम डेल्टा टी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पॉजिटिव सही है वहाँ पे. तो R इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम. विथ रिस्पेक्ट टू दिस डेफिनेशन with respect to reactant and this definition with respect to product. Product को देखना है तो increasing concentration of product upon time. तो reactant से देखना है तो decreasing concentration of reactant upon time. This is the definition of rate of reaction. This rate of reaction is always indicated with small r, and another one point is very important. Concentration is indicated with square bracket. In chemistry, anywhere there is square bracket, concentration will be means in this lesson actually chemical kinetics as well as chemical equilibrium. तो केमिकल काइनेटिक्स में केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखा मतलब वो कंसंट्रेशन को कंसीडर करना. एक्सेप्ट दिस मींस वहाँ पर रिएक्टिव प्रोडक्ट ही रहेगा. तो दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट भी है. दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ पे यूज होगा? केमिकल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में अगर स्क्वायर ब्रैकेट दिखेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को इंडिकेट करता है क्योंकि वहाँ पे फार्मूला रहेगा यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टिव ही रहेगा. क्लियर? नेक्स्ट हियर another one topic is average rate of reaction also. Average rate of reaction. So average rate of reaction is indicated with REV. Average rate of reaction. That means. So average rate of reaction also very important. Now we will discuss. Next class we will discuss average rate of reaction and as well as its graphs are very important. तो यहाँ पे मैं with respect to reactant with respect to product लिखा इसका ग्राफ इम्पोर्टेंट है. रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन चेक करना है एज वेल एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है? टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकता, नियरली इक्वल टू जीरो रहेगा. राइट? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं. मैक्सिमम हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को ही कैलकुलेट करते हैं. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन को अप्लाई करना पड़ेगा. राइट? नेक्स्ट वी विल डिस्कस द ग्राफ ऑफ rate of reaction with respect to reactant with respect to product. Lesson is very important and this lesson is belongs to physical chemistry. Okay, and all numericals are very important. Compulsory numerical ही रहेगा तो आपको न्यूमेरिकल को समझने के लिए ये बेसिक पॉइंट्स पूरा आपको समझना आना चाहिए. तो ये समझ में आएगी तो नेक्स्ट आपको न्यूमेरिकल के लिए समझ आएगा. डायरेक्ट आप लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो न्यूमेरिकल में कुछ समझ में नहीं आएगा. वेरी इंपॉर्टेंट. इसका थियरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस द ग्राफ ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट.